So hello and welcome to OneCricket Live. It's a big clash coming up next, India versus Pakistan. अभी जो मैच खत्म हुआ, we'll talk a little about that too. I know आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया पाकिस्तान आने वाला है and the hype is on. But what happened in the Sri Lanka versus Ireland game? That is something to be talked about. I have with me two of the experts, two of the cricketing minds. On my right, Gagi Raut, and here is Prabhuda Bhattacharya. Not a new face if you're a member, if you subscribe to the channel One Cricket. And yes, अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज मेक श्योर यू डू इट क्योंकि हमारे पास कंटेंट आते ही रहते हैं. तो फर्स्टली श्रीलंका ने 9 विकेट से जीत लिया है अगेंस्ट आयरलैंड. Started the tournament with a defeat against a very low ranked nation and now coming back, winning against Ireland. उसके बाद से वो लोग जीतते ही आ रहे हैं. So thoughts about the game, Gargi, Prabhuda, starting off with Gargi. I think Ireland इतने बड़े मार्जिन से हारेगी ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रही है इवन इन द क्वालिफायर्स आयरलैंड हैज बीन टॉप नॉच विद द चेजिंग एंड आज आई थिंक कैप्टन जो थे एंड्रयू उन्होंने काफी रिस्की शॉट लेके आई थिंक बहुत बुरा डिसीजन ले लिया, लेकिन श्रीलंकन स्पिनर्स अगेन केम इनटू द अटैक एंड शोड देयर मैजिक. व्हाट डू यू थिंक? So I would like to just add one thing: is this the pattern Sri Lanka is getting set into losing the first match and then doing wonders in the tournament? See, that can happen because we have seen it happen in the Asia Cup as well. Yes. पहला मैचेस हारते हैं and then जाके एकदम टूर्नामेंट जीत लिया. But it's a tough call. I won't No, talk. yes, I would also not say they are going to win it, but it's a pattern that they are getting set into that losing the first match and then doing well. And talking about today's match, I think especially the bowling, of course, Tikshana and Hasaranga. Yes. And then in the batting, Kushal Pandey's consecutive half century. Yes, without a doubt. And firstly bowling तो बहुत अच्छे किया है. Restricted Ireland to 128. उसके बाद जाके different bowling में आधा काम कर दिया क्योंकि when you restrict a particular total in 128, so I think the job is half done over there. Yeah. Not just about the spinners, I think paces ने भी काफी अच्छा momentum And दिया I would like to mention to both of you, it's getting a trend in this World Cup. The team winning the toss is losing the match mostly. Yeah. So Gargi, आपने काफी तरफ क्रिकेट खेले हैं काफी हद तक. So what are your thoughts? How much impact does the toss play in this cricket? हमने पहले देखा यूए में ज्यादातर टॉस जीत के बॉलिंग दे रहे थे, वहां पे जीत रहे थे. बट यहाँ पे जो they are winning the toss, they choosing something and the result is something else. क्योंकि आई थिंक टॉस का जो फैक्टर होता है वो पिच पे सबसे ज्यादा, पिच और ग्राउंड पे सबसे ज्यादा होता है. यूएई में हमने देखा था कि सेकंड इनिंग्स तक पिच काफी खराब हो जाती थी. दैट्स व्हाई टॉस वाज सच अ मैटर कि आप अगर पहले जा रहे हैं तो यू आर हैप्पी क्योंकि अच्छी पिच पे आप बैटिंग कर लोगे. बाय द टाइम द सेकंड इनिंग कम्स द पिच इज ऑल broken up and your spinners will It gets slow. yeah. But in Australia, since the thing about Australian pitches is it is made up of clay. More than 50% of it is clay. Or what clay does is कि when you hit the deck, when the ball hits it, it doesn't absorb the pressure. That is why the pitches are so bouncy. Bouncy and pace, is very good. Extra elevation आता है. Yes. So okay, so if अगर हम sum up करें, I know the India Pakistan clash is coming up soon, so we won't let you keep hovering over the Sri Lanka Ireland match. So we'll quickly jump into India versus Pakistan. So what are the matchups? What are the big battles that you guys are looking forward to? So if you're talking about matchups, the first matchup that I am really eager to see is Shaheen Shah versus the Indian top order. Definitely. And of course with him, an added pressure for the Indian top order is Naseem Shah, who just went past them in the Asia Cup. So the two Milanses means the World Cup 2021 Milans and the Asia Cup Milans both are together. How does Rohit Sharma, Virat Kohli and KL Rahul fare against them? It is a big thing to look at. I think Naseem Shah ने जिस तरीके he is very very young and the intent that he is showing that is dangerous I think. And another thing जैसे कि आप लोगों ने कहा शाहीन शफरीदी, नसीम शाह and both are swing bowlers. और अभी हम conditions की बात करें तो I think it was a bit cloudy. Rain होने का chances था, but recently we got to know that there are 20% chances of rain. So that's a very big news coming up for all the fans for Pakistan, for India. And the other thing is that this can be a good advantage for Shaheen Shafri and Naseem Shah if they are bowling first. What are your thoughts? Do you see the Indian batters countering at them or Shaheen Shafri and Naseem Shah? Before getting into this discussion, I would like to point out one thing to you.
Shaheen Shah Afridi has in T20Is has bowled just one delivery to Rohit Sharma, and in that he dismissed it. So be aware, Rohit Sharma, I would say. And the next thing that I would say is that yes, of course, probably the conditions and weather turned up in the last two matches, in the last 2 days before the match. I would say win the toss, bowl first would be the choice the captain should be going for. Yeah, and I also feel so. Like, हो सकता है like कभी like we have seen कि the batters had opted to bat first, tried to post a total and then defend it in a lot of occasions. But यहाँ पे conditions overcast है. So I think the captain will be looking to assess the condition first, like कैसा हो रहा है, and then accordingly change it. In a play in a more calculated approach, what do you say, Gagi? आई थिंक इट विल बी विंडी क्योंकि जैसे आपने कहा ओवरकास्ट है, साथ में ड्यू का भी फैक्टर आ जाता है बिकॉज ठंड है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, सरप्राइजिंगली बट Yes. We are seeing the players. for Australia. We are seeing the players with their Jackets jackets and jacket on. Yeah. So dew, when it comes to dew and then wind, I think काफी factor आ जाता है उसमें. Then again we will see who wins the toss because अगर dew है, अगर the pitch is a bit wet, I think it has been under covers. Yes, for the last 2 days it has been undercover, and I would say we are just I think minutes away from the toss. So that will give us a clear idea of what happens, what the team combination is. A lot of talk about who will be playing in that position after Mohammad Rizwan and Babar Azam. Will it be Shan Mashood? Will it be Iftikhar Ahmed? So what are your thoughts? Who should Pakistan opt with? देखिए, I feel like it's quite a debatable thing. The Pakistan top order is like to say that they have been over dependent on Babar and Rizwan. और one down में like middle order has been issue for them. But अगर आप देखें like properly अगर कोई वहाँ पे at number 3 में जल कर सकता है, I think that is the guy Shan Masood. And if not Shan Masood, then it has to be Fakhar Zaman. But like according to sources, according to reports, like we don't have a clear indication कौन खेलने वाला है. So हो सकता है कि दोनों ना खेले. क्योंकि काफी सारे there's been news coming up of both might not play. So if not then who? Then it can be Hyder Ali. But again उसका performances अगर हम देखें hasn't been that good. Recent series में थोड़ा hot and low रहे हैं वो. But it can be Iftikhar as well. But I feel कि they should if number 3 में अगर Hyder Ali जाता है, if for example Shan Masood and Fakhar Zaman नहीं है, it should be Hyder Ali. अगर Shan Masood है, go with Shan Masood. If Shan Masood नहीं है, it has to be Fakhar Zaman. So Gari, I would like to take your take on something interesting. There is a man in that Pakistani order who hits 156 daily. So what do you think if the top order somehow crumbles, will Asif Ali? I have been मतलब मुझे तो आसिफ अली की बैटिंग आई थिंक सपोर्टिव लगती है. काफी बार उन्होंने आके मैच को टर्न किया है. आसिफ अली इज अ की प्लेयर फॉर पाकिस्तान, बट जब हम टोटल जब देखते हैं ना ओवरऑल, आई थिंक टॉप ऑर्डर पे ही सबसे ज्यादा So where the toss has been done and the news is that India won the toss and they have opted to field. So that is a good news and वो हम चीज कह रहे थे. Captain winning the toss. They might look to assess the conditions and then they might feel first. So that is the thing that Rohit Sharma has done. Will quickly bring you all with the playing 11. कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है. But उसके पहले माइकल क्लार्क ने भी थोड़ा पिच को assess किया है and he is telling कि rock solid pitch है. There is a thin covering of nice covering of grass. So that is a good news for the bowlers. Maybe क्योंकि इंडिया पहले bowling करेगा. I won the toss, decided to field first. I want to see Shami in that 11. Mohammad Shami in that 11. Absolutely Yes. also with the pitch जो बहुत मजा आएगा because Shami has that control over it. He can bowl tight overs. We have seen it now. उस दिन भी देखा था हम लोगों ने वार्म अप मैच में कि शामी ने कितनी चतुराई तो नहीं कहेंगे बट कितनी एक्सपर्टीज के साथ वो सिचुएशन संभाली थी, प्रेशर सिचुएशन. और अगर आज शामी को बाहर रखा जाता है तो आई थिंक इंडिया बहुत बड़ा. So if you move to the live chat that is going on in our channel right now, there is a question कि Shaheen, Harish or Nasim, how will they feel? And now you have a prospect, means you have got an idea that they will be bowling second. अगर बॉलिंग सेकंड भी करेगा तो मेरे को लगता है कि पहला 2 ओवर में स्विंग होगा, 2 से 3 ओवर में स्विंग होगा. सो आई थिंक इंडिया शुड बी वेरी केयरफुल with the approach in the first few overs. I think Rohit and KL should be watchful. जो चीज नहीं हुआ है, like if you see in the पहले कुछ सीरीज में, I think they have gone all guns blazing in from the first. I think कुछ overs देख के खेलना है, that is the वो momentum create करेगा चीज का.
And जैसे ही ball like the ball will get popped, I think they will लंबे grounds से entry चाहिए so they can pierce into the gaps, convert the singles into twos, convert the twos into threes, and we know that how good Indian batters are, especially Virat Kohli, Surya Kumar Yadav, KL Rahul. जो कुका पूरा है वो इतने जल्दी डैमेज भी नहीं होती and it's If you, not like if you take my opinion, I don't see Rohit Sharma and KL Rahul very much. See, that could happen, but I'm talking about the approach. What approach should they go with? Yes, yes, yes. There's no doubt. They can be leaders, Shahid Shafiri, Naeem Shah. We know how good they are. And we'll quickly look at the playing 11 if this up here. So, Prabhuda, any news of the playing 11 call came right? I am still not got the update. We will update in 1 minute, 1 or 2 minutes. Okay, so Rohit Sharma ने यहाँ पे कहा है कि we have 7 batters, 3 seamers and 2 spinners. तो 2 spinner, अच्छा अगर it can be Akshar and Ashwin, it can be Akshar and Chahal, it can be Ashwin and Chahal. If I am Rohit Sharma, I am going with Chahal and Akshar. Yes, because yes, of course, there are things like Ashwin and the left-handers of Pakistan. Quite a few left-handers in the Pakistan order. But seeing if you try to make an all-round team, I think Akshar Patel would be a better option. But you have to either play Akshar or Ashwin. You cannot drop Chahal of that bowling line. क्योंकि ऑस्ट्रेलियन के पिचेस पे जैसे आपने कहा कि बड़ी बाउंड्रीज है देन देयर इज नसीम एंड दैट शाहीन थ्रेट तो कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली हमारा एक बैकअप तो रखना ही पड़ेगा नीचे जाते हुए बैटिंग ऑर्डर में Yes. तो अक्षर विल गिव दैट सपोर्ट Yes. इफ सपोज कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि नीचे से हमें संभालना पड़े अक्षर विल And I think Akshar will give that support, of course, but that support can be led by Ashwin also. He's also a quite capable batter. But the main thing is that Akshar brings that variety, that left-handed variety to the batting lineup. So Okay, so the playing 11 is here of India, and जैसे कि आप लोग कह रहे थे हम लोग शमी को देखना चाहते थे, and he is here along with Bhuvneshwar Kumar, Arshdeep Singh, Ravichandran Ashwin and Akshar Patel is the choices, and I second with it. okay. And I second with it. जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि चहल एंड अक्षर को खिला सकते थे, but I think चहल एंड अक्षर अगर आप देखिए कोई लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है, देखिए शान मजबूत है पाकिस्तान के 11 में, काफी सारे और भी है, तो मोहम्मद नवाज है. सो इफ अ लेफ्ट आर्मर, इफ अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इज बॉलिंग टू लेफ्ट आर्मर, और इफ अ लेग स्पिनर इज बॉलिंग टू लेफ्ट आर्म, तो बहुत अंदर आता है, तो इट मेक्स इट इजी. क्वेश्चन रहेगा तो वेरिएशन रहेगा, एंड नॉट जस्ट अबाउट दैट. आई थिंक एक्सपीरियंस है, एंड साथ में आई थिंक ही इज अ थिंकिंग क्रिकेटर. वो सोचता है कि कहां पे फील्डर है, कहां पे कौन से एंगल से आ सकता हूं. ही यूजेस द रिलीज पॉइंट आल्सो to his favor. So ऐसे काफी सारी चीजें हैं and gives the depth in the batting as well. So I think that will be a very good option. I second with it, but देखते हैं how they fared. And for Pakistan, we have Babar Azam, Mohammad Rizwan opening the batting. Shan Masood at number 3, Haider Ali को खिलाया है number 4 में. Mohammad Nawaz, Shadab Khan, Iftikhar Ahmed, Asif Ali है 8 में. Shaheen Shafri, Harris Shroff, Naseem Shah. So that's a good batting lineup. And I would say it's a long batting lineup and it looks a well-rounded team. of course All the bases covered. yeah Without a doubt, Prabhuda, हम देखें, but again, talking point will be of the middle order कि आप चाहते हो, like there is one thing I would like to ask. हमने देखा है पिछले कुछ मैचेस में कभी कभार शादाब खान को प्रमोट किया गया है, कभी कभार नवाज को ऑफ द ऑर्डर प्रमोट किया गया है. तो what are your thoughts? Like नवाज को कहाँ पे बैटिंग करना चाहिए, हालांकि also Prabhuda coming to you, शादाब को कहाँ पे बैटिंग करना चाहिए? I think Nawaz will be that floater. He will be brought in at the top or at the middle order, seeing what the match situation is, and then I would say that Shadab Khan would be coming down the order. और अगर फैंटेसी की बात करें, यू आर द फैंटेसी एक्सपर्ट इन आवर टीम, क्या लगता है आपको कैसे कैसे पिक करेंगे? हु इज योर कैप्टन फर्स्ट ऑफ ऑल? I would go for Australian pitch. Opponent is Pakistan, and it's a World Cup match. Only one name comes to me as a captain. That's Virat विराट Kohli. कोहली, ऑफ कोर्स. And I would be a little bit towards Mohammad Shami. I've got a मेरे को ऐसा लगता है कि ये पेस एंड बाउंस के बीच में, सो हिट टू हिट बॉलर्स की बात करें तो इंडिया में मोहम्मद शमी है अभी. सो क्या पता, आई थिंक द बिग थिंग विल बी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जल्दी आउट कर दो, एंड यू विल सी द पाकिस्तान टीम collapsing, crumbling. But yes, I'm not keeping like nothing against the other batters, but they are not in the perfect form. But also, I will keep Shan Masood in the equation. He is someone who can hang around and play along the situation. It means if you ask me about how to give a team about how to make the 11 for the fantasy 11, I would go with 2 keepers in this match. Okay. And I will take both of your takes on it. My 2 keepers for the match is Rizwan and Dinesh Karthik. Why I would say to you after this, my 4 batters would be Sky,
Virat, Babar Azam, and Shan Bajnur. I would pick only one all-rounder. That might be a surprise, but it would be Hardik Pandya. And my four bowlers would be Shaheen and Naseem from Pakistan, and Shami and Jaspreet from India. Okay. So very less amount of spinners. क्या इसका वजह ये है कि क्योंकि thin covering of grass है ऑस्ट्रेलिया Yes, के as you said, and it is a rock solid pitch as you have said. Yeah, it's not me, it's not Michael Clark saying, but I'm conveying to you guys. So I would prefer with the pace heavy kind of a team. And my vice captain would be of course Rizwan. Kind of amazing, he looks undismissible. तो मेरा एक सवाल है इसमें, आप दिनेश कार्तिक को भी खिला रहे हो रिजवान के साथ एंड इंडिया इज चेजिंग, सो आई फील दिनेश कार्तिक काफी लेट आएगा एंड सो व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड हैविंग दिनेश कार्तिक, मे बी प्लेयर एडिशनल वो बैटर लो ऑर्डर बैटर पाकिस्तान को खिला सकते थे. दिनेश कार्तिक का एक ही बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ही गिव्स डेप्थ टू द बैटिंग ऑर्डर. And my logic is that I don't think that Indian openers will be firing today. It will be the middle order that will be doing most of the job, and so all my batters from India are from the middle order. मैं एक एडिशन करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हैव अश्विन इंस्टेड ऑफ दिनेश कार्तिक इन फैंटेसी 11. Yeah, people can go with Ashwin because as he said already. पर्सनल ओपिनियंस आपका भी कुछ हो सकता है गाइस, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट आर योर ओपिनियंस, व्हाट शुड बी द फैंटेसी 11 ऑफ योर गाइस. एंड फैंटेसी 11 की बात करें तो इट हैज टू बी क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी 11. मेक श्योर, क्योंकि वहां पे काफी सारे ऑफर्स आ रहे हैं, आप चाहे तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले प्ले स्टोर से, you'll get a lot, you'll get to see a lot of things which is going on. So one more player I would like to talk about with both of you. There are comments, the chat has been spanned by his name, that's Hardik Pandya. Okay. So what do you think his impact will be today? हार्दिक पांड्या has always been एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर, की प्लेयर फॉर इंडिया. फील्ड में भी उतने कंट्रीब्यूट करते हैं जितना बैट और बॉल से करते हैं, और हमने देखा है कि he has been trusted with in the middle order, जहां हमारा आई थिंक थोड़ा सा एक वो होल बन जाता है when it comes to the bowling lineup, क्योंकि डेप्थ और टॉप ओपनिंग बॉलिंग की तो सब लोग बात करते हैं, लेकिन जब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, सॉरी मिडिल ओवर्स की जब बात करते हैं, तब कोई सॉलिड हमारे पास एक कोई रोल पकड़ के तो नहीं चल रहा है कि आई हैव टू बॉल इन द मिडिल ओवर्स बाय बैट. तो हार्दिक पांड्या इज दैट बॉलर, उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इवन आईपीएल में जिस फॉर्म से वो वापस आ रहे हैं विद द कैप्टनशिप जो उन्होंने की है, तो हार्दिक पांड्या इज ऑब्वियसली द की प्लेयर फॉर इंडिया. Absolutely. Second with Gagi, you know, in to few of points, I think मेरे को जो लगता है कि हार्दिक पांड्या, अगर आप ये गुजरात टाइटंस के लिए जो कैप्टनसी किया है, it's a different sort of हार्दिक पांड्या. Like this is the हार्दिक पांड्या we haven't seen before. और साथ में I think he can also pull with the new ball if you want. And he's not who's bowls in 120 pace. He's someone who's been clicking 135 plus. तो इस pitches में and he's got the steep bounce, you know, जो bouncer में ball करते थे, I think ये चीजें काफी important हो सकता है. According to Prabhu's analysis and analytical article, I think he has something to say regarding Mohammad Rizwan. Yes, Mohammad Rizwan is very susceptible to bounces, and that has been used very less against him in the Asia Cup when he scored plenty of runs. And I think Hardik and Shami will be the two bowlers who would pose a threat to Rizwan. Without a doubt. और एक और सवाल आता है गाइस कि इंडियन जो बैटिंग ऑर्डर है वहाँ पे ऋषभ पंत नहीं है, तो अगेन एक लेफ्ट हैंडर का कमी, बट हाँ अक्षर पटेल है. बट क्या आपको लगता है कि लगातार राइट हैंडेड बैटर्स एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ शाहीन शफरी एक लेफ्ट आर्मर है, वी नो द राइट हैंडेड बैटर्स इन द मैचेस, दे हैव मोहम्मद नवाज जो अगेन लेफ्ट हैंडर है, एंड इवन शादाब खान की बात करें हम तो वी हैव सीन दैट विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, they haven't fared that well against the spinners in the recent past. अगर आप लास्ट 2 से 3 साल देखें तो थॉट्स ऑन इट कि अक्षर पटेल को फ्लोटर के तौर पे खिलाना चाहिए. Yes, I think in the either India or Pakistan analysis also in the channel, when it was asked to me, I said that we can definitely use Akshar as a floater. Promote him up the order, saying you go and just hit the ball. Do anything you like. That would do two things. One thing, it will increase the scoring rate at a certain stage, and another thing, it will preserve a wicket like Surya. It will preserve a wicket like Dinesh Karthik or Hardik Pandya for the later stages. So I again think, वो anchoring innings play yes, yeah. So I think that could be an option, but I don't think India will go with that option. And the second it thing, depends a lot on the situation also. The situation. but I don't see India promoting Akshar Patel in the order, but could be an option. And the second thing is that, as you said, absence of a left-hander. I practically, the way I see this game, I don't believe in this kind of matchups. I would say that play your game to the best of your abilities, you will win the match.
हाँ मतलब आई थिंक लेफ्ट हैंडर जब होते हैं बैटिंग लाइनअप में तो दिक्कत आती है आगे वाली टीम के बॉलर्स को, बट क्या इज दैट अ विनिंग फैक्टर और अ लूजिंग Yes, फैक्टर? that's what I It is something that is definitely a factor, but not a decisive but factor. not the decisive factor एग्जैक्टली। तो वो विन और लूज सिचुएशन तो नहीं होगा उससे कि अगर हार्दिक पांड्या अगर लेफ्ट हैंडर नहीं है तो क्या हम जीत जाएंगे या हार जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा मुझे तो नहीं लगता। Getting to the point now, to the main question that I would. मेरे पास एक और सवाल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट या मिथ वाला सवाल कह सकते हो आप, क्योंकि रिचर्ड किटलबॉरो इज द थर्ड अंपायर इन दिस गेम और वी हैव सीन द हिस्ट्री इन द पास्ट। जब 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था वहां पे भी रिचर्ड किटलबॉरो वाज अंपायर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अब पहले भी काफी सारे आईसीसी नॉकआउट गेम्स में जहां पे इंडिया हार जाता है वहां पे रिचर्ड किटलबॉरो वाज द अंपायर एंड वंस अगेन ही इज बैक। I would hope and pray that the fortune turns today. Let's hope that the dark cloud goes on and the sun shines in the favor of India. I think when it comes, the sun shines in the favor of India. जबकि मुझे अभी थोड़ा पाकिस्तान की तरफ फेवर दिख रहा है सन का, क्योंकि हैरिस रऊफ है जिन्होंने बहुत सारा बीबीएल खेला है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। आई बेट कि उन्हें काफी कुछ पता होगा कि कैसे परफॉर्म करती है ऑस्ट्रेलियन पिचेस। साथ ही साथ मैथ्यू हेडन That's going to be the big factor. That's going to be the big factor. He will give them quite a few insights. Sean Tate also in the bowling. So Quite quite a few Australians back there. quite a few Australians back there in the Pakistan dugout, you know, काफी सारे एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं पाकिस्तान। क्या इंडिया के पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है? आई डाउट, मे बी होगा बट थोड़ा India के पास 5-1 का advantage. 5-1 advantage. So and then now going back to the main question of the day, I will take your predictions first. ओके। Who would be the winner of the match and who do you think will turn out to be the X factor? विनर ऑफ द मैच ऑब्वियसली दिल से दिमाग से इंडिया ही निकलता है। And who will be that factor for India? Who will be that factor for India? This is a battle for me. Either it will be Virat Kohli, Mohammad Shami, or Arshdeep, or and Akshar also. Four picks. I'll be a little analytical in my approach. You know, अगर आप पूछो कि who will be the winner, थोड़ा conditions है। पाकिस्तान के लिए। नहीं, थोड़ा conditions है। This were very nice. नहीं, वैसा कोई बात नहीं, हम इंडियन दिल से इंडियन, ऑलवेज बिन इंडियन सपोर्टर। वैसा कोई बात नहीं, मिसलीडिंग गाइस है। ओके, अब पॉइंट में आता है एंड दैट इज कि व्हाट आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान इज गोना बैट फर्स्ट, तो इंडिया अगर इन दोनों को जल्दी आउट कर दे then Pakistan might fall into a below par total. I think 160 या 150 से कम अगर रिस्ट्रिक्ट कर देता है तो ये इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर इंडिया, प्रोवाइडेड वो विकेट ना खोए इन द अर्ली इन द पावर प्ले। अगर होता भी तो मैक्स टू मैक्स वन, then it's going to be India and it's going to be a good battle। हमने पहले देखा है कल अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के गेम में अफगानिस्तान वाज वेरी क्लोज इन द गेम डिस्पाइट स्कोरिंग वेरी लेस रन, इवन 130 से भी नीचे था। So it's going to be a good battle, but hard तो होता है इंडिया। And your X factor player. X factor player, difficult question, but I'll go with Mohammad Shami today. और which Mohammad Shami नहीं तो हार्दिक पांड्या। And if you ask me, my prediction India wins the match. Virat Kohli will be the player of the match. okay, one of my picks. तो इसमें मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, आपको क्या लगता है बॉलिंग ओपनिंग लाइनअप के साथ India. Who will be the two bowlers? India. Yes. I would say the first 2 overs it will be Bhuvi and Shami. Oh. And after that, Arshdeep and Hardik Pandya could chip in the power plays. हाँ, I think हार्दिक पांड्या को they will save for the middle overs, but opening में अर्शदीप भी आ सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, because they will try to capitalize on that over. But I don't think the first 2 overs if he was picking about, I think it will be Shami and First bowler है। हाँ मतलब पहले 2 bowlers शामी और भुवी होंगे, पहले 2 overs, उसके बाद 3rd 4th ओवर से हम अर्शदीप, हार्दिक इन सबको देख सकते I have got a different opinion as again. I think Bhuvneshwar Kumar and Arshdeep होगा। Arshdeep नहीं, you know we have seen Arshdeep with a new ball, he has been pretty brilliant. Yes, and the South Africa series. और वो राइट एंड लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन देता है दोनों एंड से, दोनों आप देखें तो राइट हैंडेड बैटर है। अर्शदीप के पास उतना पेस तो है नहीं, बट यस उसके पास एक बाउंसर है, काफी सारे वेरिएशंस भी है। सो आई थिंक इट शुड बी भुवी, आई थिंक भुवी अर्शदीप, देन 3rd ओवर भुवी, देन 4th ओवर में शायद हार्दिक या शमी दिख जाए हमें। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। Okay, so that
I think that sums it up for the match. Let's enjoy the match now. Yeah, that's as Prabhuda said, that sums it up for the match. We'll see what unfolds over here. India versus Pakistan. कौन जीतेगा? आप comment section में बताइए, and we'll bring up many more coverage. But साथ ही साथ आपको live coverage भी मिलेगा. Tracks में commentary हो रहा है, One Cricket में news से related काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स बन रहे हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर कवरिंग सो मेक श्योर आप जाइए एंड जस्ट स्टिक टू द वन क्रिकेट नेट until then tata goodbye subscribe the channel share with your cricket friends and yes